Hello students, this is topic 1 again because now we are starting a new lesson. It is unit and dimensions, and today we are discussing about introduction to measurement. Introduction to measurement. It means this is the topic on introduction to measurement. जो प्रीवियस डिस्कशन हमने किया था टोटल 17 टॉपिक्स पे, उसमें हमने कवर किया एक बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को कि एक स्टूडेंट को फिजिक्स में कमांड बनाने के लिए जिन जिन मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हमने पहले ही क्लियर कर दी ताकि आप बेसिक डिस्कशन के वक्त कोई प्रॉब्लम फील ना करें ना। वो आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट। दिस इज द सेकंड चैप्टर यू इन फिजिक्स। और अगर डिटेल में कहें तो जो इससे पहले पढ़ा वो एक टूल लेसन था, केवल एक रिकैप थी। बेसिकली फर्स्ट लेसन फिजिक्स का आपके सामने है। दिस इज टॉपिक 1, इट इज इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट कि एक मेजरमेंट का क्या बेस है। तो एक जरूर सी बात पहले क्लियर करें कि मेजरमेंट कोई लेटेस्ट प्रोसेस नहीं है। मेजरमेंट एक लॉन्ग ईयर्स एगो प्रोसेस है, बहुत पहले से ये प्रोसेस चला आ रहा है, बट एक्यूरेसी की नीड ने हमें लगातार डेवलपमेंट की ओर प्रोसीड किया। पहले हम अंगुलियों से लेंथ को नाप करके, हाथों से लेंथ को नाप करके एक्सप्लेनेशन देते थे। वेट को हाथ में चीज़ों को भर के एक दूसरे को मतलब एक एक्सचेंज प्रोसेस चलती थी। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल, तो हमने दो हाथों से या दो मुट्ठियों से एक्सचेंज कर लिया ऑब्जेक्ट का। तो दिस इज अ बेसिक मेजरमेंट कि इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी का प्रॉब्लम था। किसी का हाथ लंबा है, किसी का हाथ छोटा है। अगर मैं आपको 5 मीटर लेंथ स्ट्रिंग देता हूँ अपने हाथ से नाप के, और आप मुझे 5 मीटर मतलब 5 यूनिट स्ट्रिंग वापस करते हैं अपने हाथ से मेजर करके, तो हम जानते हैं कि 2 पर्सन्स के द लेंथ ऑफ द हैंड आर नॉट इक्वल फॉर 2 पर्सन्स। So it is very tough to have a accuracy in the measurement. इस नीड को देखते हुए डेवलपमेंट हुआ, प्रोसेस बढ़ती गई और फाइनली ये डिसाइड कर दिया गया कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक बेसिक तैयार किया जाएगा। उस बेसिक को यूज करके हम लेंथ, मास और टाइम को मेजर किया करेंगे। तो जो बेसिक सबसे पहले बने उसमें हमने 3 quantities are there at which the measurement system is based on these 3 first. These are length, mass and time. These are 3 fundamental quantities, starting fundamental quantities. सबसे पहले हमारी जरूरत थी कि हम लेंथ, मास और टाइम को क्लैरिफाई करें। तो अपनी मेजरमेंट में प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स को, अनएक्यूरेसी को ओवरकम करने हम मास एक्सचेंज कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में, लेकिन जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो अनऑफिशियल है। हम मास के लिए जो तरीका यूज कर रहे हैं वो अनऑफिशियल है। तो एक लेक ऑफ एक्यूरेसी हम देख पा रहे हैं अपने मेजरमेंट में। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया और डिफाइन कर दिया गया कि लेंथ का बेसिक क्या होगा, मास को कैसे बेसिक दिया जाएगा और टाइम का बेसिक। So 3 fundamental definitions are there in physics, and these are the starting definitions to overcome all the problems of inaccuracy. The very first attempt taken in the field of measurement. The 3 fundamental definitions of length, mass and time. What are these definitions? वैसे ये definitions scientific हैं, elementary level पे इनका discussion उतना यूजफुल नहीं है क्योंकि ये वेव रिलेटेड डेफिनेशंस है और हायर लेवल डेफिनेशन है। बट फिर भी एक सिंपल क्वेरी करेंगे। लेंथ is the basic definition of length is based on the principle of wavelength of krypton atom. Wavelength of krypton atom, and the definition is based in a particular number. It is 1650 763.73 यूनिट। इट मीन्स अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो क्रिप्टन एटम की वेवलेंथ
जो कि बहुत स्मॉलेस्ट है, अगर ऐसी 16,50,763.73 वेव्स कंबाइन कर दी जाए तो इतनी वेव्स टोटली जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, दैट स्पेस, दैट लेंथ इज measured is known as 1 meter. This is the basic definition of 1 meter and this is the fundamental for measuring the length. आज के टाइम पे अगर हम 1 मीटर को डिफाइन करते हैं या किसी भी कंट्री में 1 मीटर लेंथ को एक्सप्लेन किया जाता है, देन दिस इज द बेसिस। एक इंटरनेशनल ब्यूरो ने, जिसमें हर कंट्री के साइंटिस्ट अवेलेबल हैं, ने बैठ करके ये डिसाइड किया साइलेंटली कि किसी भी कंट्री का 1 मीटर एक जैसा हो, 1 kg सेम हो, एंड द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड शुड बी सेम फॉर ऑल द कंट्रीज। सो फॉर रिफाइनिंग द अनएक्यूरेसी, फॉर रिमूविंग द अनएक्यूरेसी फ्रॉम आवर मेजरमेंट, it is a need. The basic measurement is a need. So this is the fundamental definition of 1 meter, and meter is the word which is used to measure length. 16 लाख आप कह सकते हैं, 16,50,000 and a 763.73 unit. It means this much waves of krypton, the whole length covered by this. It means अगर krypton के एक एटम की लेंथ आपको मालूम है तो उस एक एटम की लेंथ में आप जब इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेंथ डिसाइड होगी, दैट इज डिफाइंड एज 1 मीटर ऑन स्टैंडर्ड नोटेशन। Similarly, mass is defined a standard cylinder made of platinum and iridium. ये आज भी पेरिस में अवेलेबल है। जो बेसिक डेफिनेशन के लिए एक सिलेंडर बनाया गया, लिटिल सा सिलेंडर, वो प्लेटिनम इरिडियम मेटल का बनाया गया। तो किसी भी कंट्री में आज अगर 1 kg को डिफाइन किया जाता है तो उस प्लेटिनम इरिडियम के वेट के मास को मेजर करके हर कंट्री को दिया गया कि इससे आप 1 kg डिफाइन करेंगे। सो 1 kg इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड। इट इज द वेट ऑफ एन स्टैंडर्ड सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम। तो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ वो सिलेंडर जो आज भी पेरिस में अवेलेबल है, उस सिलेंडर का वेट, मास माफ कीजिएगा, 1 kg है, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 kg। सो इट इज 1 किलोग्राम। प्लेटिनम इरिडियम मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी कम होने से ये सिलेंडर एक लॉन्ग टर्म तक रिएक्शंस से सेव किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन में आप देखते हैं कि हम ऐसे मेटल्स यूज करते हैं जो केमिकल रिएक्शन ना करें, ताकि उनका वेट डिक्रीज या इंक्रीज ना हो। सो दैट सिलेंडर इज मेड ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम, these two metals, and its weight is known as 1 kg in international level. So it is prescribed that what is 1 kg. 1 kg भी डिफाइन हो गया है, 1 मीटर भी डिफाइन है, and time is defined as 1/86,400 part of a day. और ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है क्योंकि एक डे में 86,400 seconds होते हैं। So 1 second is defined as the 1/86,400 part of a day. That is 86,400 part. This much part, 1/86,400 part of a day is 1/86,400 of a day is second. 1 second it is. So मेजरमेंट के इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि साइंस ने जब से डेवलप होना स्टार्ट किया है तब से मेजरमेंट हम बहुत पहले से करते हैं, बट वो मेजरमेंट अनएक्यूरेट थे। हमें एक ऐसे मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज कर सकें। एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब किसी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी तो उन दोनों का 1 kg सिमिलर डिफाइन होना चाहिए, 1 मीटर का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए। सो फॉर removing the problems of inaccuracy and for giving a uniform platform to all the countries, these are the standard definitions of length, mass and time. Length is measured in meter, mass in kilogram, and time in second. And these are the basic definitions behind the three terms. 16,50,763.73, that is 73 unit of wavelength of krypton atom is known as 1 meter. The mass of a standard cylinder made of platinum iridium
is known as 1 kg, and 1 by 86,400 part of a day is known as 1 second. Basic system. So these are the fundamental units. मेजरमेंट को एक बेसिक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये सब डेफिनेशंस बनाई गई हैं. अब आज अगर हम बात करें तो हमारे लिए 1 मीटर का एक पर्टिकुलर मीनिंग है. अब हम दो पर्सन्स के बीच में अगर कोई एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड के किलोग्राम है, एक वेल डिफाइंड 1 मीटर है, एंड टाइम इज आल्सो फिक्स्ड, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स. वो टाइम भी था पहले जब लोग सन के मूवमेंट को देख करके उसकी शैडो के बेस पे ये पता लगाते थे हमारे एंसेस्टर्स पुराने लोग कि अभी कितना बजा है, और वो एक केवल एक अनुमान होता था कि इट इज़ लाइक 5:30, इट इज़ 5:40, इट इज़ 6 o'clock इवनिंग. तो वो एक बेसिक एक्सप्लेनेशन. बट आज हमारे पास जो क्लॉक्स हैं हम उनमें सेकंड्स तक एक्यूरेसी के साथ ये बता पाते हैं कि व्हाट इज द टाइम एट दैट टाइम. सो बेसिक नीड थी एक्यूरेसी की तरफ जाने की. हमने बेसिक डेफिनेशंस बनाई, 1 मीटर डिफाइन किया, 1 किलो डिफाइन किया, 1 सेकंड डिफाइन किया, एंड दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट. ये सारा प्रोसेस तैयार करने का काम एसआई सिस्टम ने किया. दैट इज एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स. और इस सिस्टम ने 3 सिस्टम्स को अप्रूव किया. दीज आर एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम. What are these 3 systems? MKS is the system in which mass is measured in kilogram, length in meter, and time in second. K for kilogram, M for meter, and S for second. CGS is the system in which length is measured in centimeter, mass in gram, and second is the unit for time in this system. FPS is the last system of SI system. It is foot, pound, second system. Foot is the unit for length in this case, pound is used to measure mass, and second is as for second. MKS system meter, kilogram, second system. CGS system centimeter, gram, second system, and FPS system it is foot, pound, second system. These are the 3 basic systems in our SI system. तो अलग अलग कंट्री अपने अपने प्रोसेस में इन तीनों में से किसी भी सिस्टम को यूज कर सकती हैं. स्मॉल क्वांटिटीज मेजर करने के लिए हम CGS यूज करते हैं. फॉर लार्जर वैल्यूज वी यूज MKS सिस्टम. बट MKS सिस्टम में भी अगर हमारी वैल्यू बहुत लार्जर है तो हमारे पास और भी यूनिट्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं. तो एक बार हम सर्वे करेंगे उन सारी यूनिट्स का जो हम यूज कर सकते हैं अपने मेजरमेंट में. स्टार्ट करते हैं हम लेंथ से. सपोज वी आर measuring length, then the basic unit for length is meter. Meter is the basic unit for length. The higher units, it means the unit larger than meter, are decameter, hectometer, kilometer. Decameter, hectometer, kilometer, and a smaller CR are decimeter, centimeter, and millimeter. Besides it, megameter, gigameter are also the higher units. Megameter, gigameter, terameter, and little units are millimeter, millimeter. After that there is a special unit that is called micron. After micron there is a unit named as nanometer. After nanometer there is angstrom, and after angstrom the final one is picometer. Other units are also there, but these are sufficient in our physics study. After terameter there are hexameter and petameter also, but these are not in common use. Terameter is up to this level, it is sufficient in physics. Picometer, femtometer, autometer are also there, but up to picometer it is sufficient. Picometer. After that there is one unit also I want to write, it is Fermi. Femtometer is Fermi. So these are the fundamentals. Fermi is the last unit. Fermi, picometer, Fermi. So these are, what are these units? I want to give an information about that. It is decameter is 10 meter. Hectometer is 10 to the power 2 meter.
kilometer is 10 to the power 3 meter, megameter is 10 to the power 6 meter, giga is 10 to the power 9 meter, tera is 10 to the power 12 meter. After that 15 and 18s are there, but we are discussing only those units which are important in our physics. Meter is the basic, it is 1 meter is 1 meter, decimeter it is 10 to the power minus 1 meter, centimeter is 10 to the power minus 2 meter, millimeter is 10 to the power minus 3 meter, micron is equivalent to 10 to the power minus 6 meter, nano is 10 to the power minus 9, angstrom is 10 to the power minus 10 meter, picometer is 10 to the power minus 12 meter, and Fermi, the last one, is used to measure the radius of nucleus, it is 10 to the power minus 15 meter. So these are the fundamentals. एक बार फिर recall करें. Meter is the basic. This decameter, it is 10 meter, hectometer 100 meter, kilometer 10 to the power 3 meter, megameter 6, gigameter 9, terameter 12 powers. And the lower units are, the smaller units are decimeter is 10 to the power minus 1 meter, centimeter 10 to the power minus 2 meter, millimeter 10 to the power minus 3 meter, micron is 10 to the power minus 6, nanometer is 10 to the power minus 9, angstrom 10 to the power minus 10, picometer is 10 to the power minus 12, and finally Fermi, the last unit. Fermi is 10 to the power minus 15 meter. Femtometer is also the name for Fermi. Femtometer and Fermi, these are same. The name for both have the same meaning here. Fermi and femtometer, and the value is 10 to the power minus 15 meter. This is the basic सिस्टम फॉर मेजरिंग लेंथ. आप इसको मास के लिए भी यूज कर सकते हैं. मैं दोबारा न बना के इसी में एक्सप्लेन करूं कि आप मीटर को ग्राम से एक्सचेंज कर दें. इट इज नाउ ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम. देन दिस विल बी द सिस्टम फॉर मास. डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम. You can also use nanogram. Angstrom affiliated gram is not in use, so leave this in the case of gram. It is picogram, and femtogram can also be used. Femtogram. So if you change meter to gram, then this will give you a new system for mass also. And for time, you should convert it to seconds. Second, decasecond, hectosecond, kilosecond, megasecond, gigasecond, terasecond. And decisecond, centisecond, millisecond. Micron is not microsecond. You can use microsecond, nanosecond, angstrom. You should leave angstrom here in the system of time. Picosecond and picosecond. Up to picosecond, it is sufficient to say about time. So if you change meter by gram or second, then you can obtain a new system for mass and time. So मैं सोचता हूँ आप समझ गए इसी एक सिस्टम में. मुझे 3 अलग अलग सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है. जैसा मैं लेंथ के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिमिलर वे में आप टाइम और मास के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. और डेटा आपके सामने है. फर्मी इज द लास्ट इन दिस लिस्ट, एंड इट्स वैल्यू इज 10 टू द पावर minus 15 meter. 10 to the power minus 15 meter is Fermi. So this is a basic list for different units of length. It is the system for measuring length in different units. Some other important units of length are also there. What are these units? I will give an idea about that also to you. These standard units are, the very first unit is X-ray unit. X-ray unit is a standard unit of length. It is not in our list taken here. It is a special unit and is equivalent to 1 X-ray unit is equivalent to 10 to the power minus 13 meter. So it is a smaller unit, like Fermi level. It is a small unit, it's 10 to the power minus 13 meter. It means if you connect it to Fermi, then you know that 1 X-ray unit is 10 to the power minus 13 meter, and 1 Fermi is, as I have given you an idea about this already, it is 10 to the power minus 15 meter. On dividing this, you will get 1 X-ray unit is 100 Fermi. So it is approximately 100 Fermi. 1 X-ray unit is approximately 100 Fermi. It is a smaller unit. Second important unit is light year. Light year with year
Do not make yourself confuse. Light year is a unit for length, not for time. It is the unit for length, and this is the length covered by light. Length. This is length covered by light. Covered by light in a year. Length covered by light in a year, and you know that the velocity of light is 3 into 10 to the power 8, and total seconds in a year is 3.1 into 10 to the power 7 approximately. So by solving this, you will get 9.46 into 10 to the power 15 meter. This much length is known as 1 light year. This is an approx value, so if you multiply this, you cannot get this. This is the real value. इसको multiply करके कुछ कम आएगा, but ये एक approximation था, इसीलिए आप इसको अगर डिटेल में 1 ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे, then you will get 9.46 into 10 to the power 15 meter. This is the value of 1 light year. It is 9.46 into 10 to the power 15 meter. Third important unit is astronomical units. Astronomical unit. It is, what is one astronomical unit? It is noted by AU, astronomical unit. And astronomical unit, you know, it is the distance between sun and earth. Total distance between sun and earth. If there is sun, there is earth, then this much distance is known as one astronomical unit. Astronomical unit means distance between sun and earth, and it is approximately 10 to the power 8, 1.5 into 10 to the power 8. I can say it as 15 crores kilometer. It is in kilometers. It is about 15 crore kilometers. Approximately it is 15 crore kilometers. You can obtain this value also, because हम जानते हैं कि sunlight को अर्थ तक आने में about 500 approx second लगते हैं, और light की speed हमें मालूम है, तो by using time and velocity you can obtain this value also. But I know it. This is approximately 15 crore kilometers. In accurate manner, जहाँ तक मेरा opinion, it is 1.496 into 10 to the power 8 kilometers. This much. It is accurately, it is 1.496 into 10 to the power 8 kilometers. This is the value of astronomical unit. One astronomical unit is about approximately 15 crore kilometers, and this is the distance between Earth and Sun. The total distance between Earth and Sun is known as astronomical unit. So these are three important and different units. These units are not included in our list. These are specific units. One important unit is also there, which is known as parsec. Parsec को पहले आप clearly समझिए कि what is called one parsec. Suppose it is sun and it is earth in the surrounding of sun, and this is the circular track of earth. We know that earth rotates in an elliptical track around sun, but यहाँ पर हम एक approx idea ले रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि earth सन की सराउंडिंग में सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है. तो हम जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है. इट इज 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, एंड इन किलोमीटर्स यू कैन राइट 8 किलोमीटर्स. सो ये अर्थ, ये सन, अगर हम एक डिस्टेंस पॉइंट कंसिडर करें, किस डिस्टेंस पर, पहले हमें ये डिस्कस करना होगा. हमें ये पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे कंसिडर करना है कि जब हम अर्थ और सन को इस पॉइंट से मीट कराएं, तो इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल 1 सेकेंड इन एंगल यूनिट. 1 सेकेंड को एंगुलर यूनिट में आप ऐसे समझें, इट इज 1/60 into 60 डिग्री. दिस मच एंगल यू हैव टू सबटेंड एट द पॉइंट. तो अर्थ और सन को देखने के लिए हमें एक ऐसे डिस्टेंस पॉइंट पर जाना है जहां से अर्थ सन को ज्वाइन कराने वाली लाइन इस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करे, दैट एंगल इज ओनली 1 सेकेंड. इट इज 1 सेकेंड लाइक दिस. दिस इज द नोटेशन फॉर दैट 1 सेकेंड, एंड इन डिग्री नोटेशन इज 1/60 into 60 डिग्री. तो इतनी डिस्टेंस पर यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ रही है, इस डिस्टेंस को हम पार्सेक कहते हैं. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पार्सेक, up to which if you take a point at that place, then 1 second angle will be subtended by the line joining earth and sun at the point. तो अगर बात इस डिस्टेंस को मेजर करने की है, तो we have
an idea about that, it is we know that angle is in mathematics, angle is defined as arc over radius. Since angle is arc over radius, so arc can be taken as angle into radius, and angle is here 1 by 60 into 60 degree, but you should use this formula only in the case when angle is in radian. So convert first it into radian. It is pi over 180 into 1 by 60 into 60 radian. This is angle. याद रखें कि ये फॉर्मूला यूज करते वक्त आपको एंगल डिग्री में नहीं लगाना है. You should change this value into radian. So arc is equal to angle into radius. Angle is pi by 180 into 1 by 60, and radius is arc. Angle is equal to arc upon radius. So arc is equal to angle into radius. Radius we have to calculate, and arc is 1.496 into 10 to the power 8 kilometer. This is arc. Angle is equal to arc over radius. Angle is 1 second, and its value in degree is 1 by 60 into 60 degree. 1 by 60 into 60 degree. It is pi by 180 into 1 by 60 into 60. This is the value of angle. Radius we have to calculate, and this is r 1.496 into 10 to the power 8 kilometer. On solving this, we will get r equal to 180 into 60 into 60 into 1.496 into 10 to the power 8 kilometer divided by pi. And if you solve this, you will get about 3.08 into 10 to the power, approximately 10 to the power, it is in kilometers, so it is 10 to the power 13 kilometers. Then this is the value of parsec. In meter, it will be 3.08 into 10 to the power 16 meter. This is 1 parsec. It is greater than, it is larger than light year. Approximately, if you divide light year and parsec, you will get parsec is 3.08 into 10 to the power 16 meter, and 1 light year equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. So the ratio of these two will be about 3.26. It is 1 parsec is 3.26 light years. So parsec वो distance है, उस distance को parsec कहते हैं जिस distance पर अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी, एंड दिस इज अ लार्जर डिस्टेंस, मोर देन लाइट ईयर्स. Light year is the distance traveled by light in 1 year, and this distance is 3.26 times more than the light year. So मैंने आपको ये एक जनरल आइडिया दिया कि हम कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पर हमें सीखने चाहिए. फर्दर अगले लेक्चर में मैं आपको यूनिट का एक आइडिया दूंगा. थैंक यू.